श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अथ प्रथमोध्यायः। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादिरतशास्त्रे शब्भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतसूरय तेजो वारीं मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहुकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजिन्तकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्र्यो यो न मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्परोगलितं फलं शुकमुदामृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नेमिषे नेमिषेत्रे ऋषय शोनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत त एकदातु मुनय प्रातर्हुताहुताग्रय सत्कृतं सूतमासीनम् अप्रचरिदमादरात् ऋषय ऊचु त्वया खलु पुराणानि सौतुहासानि चानग आख्यातान्यपधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायण अन्ये च मुनय सूतो परावरविदो विदु वेत्थत्वं सौम्यं तत्सर्वं तत्त्वस्तदनुगृहात् ब्रूयुस्निगद्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमपुप्यत तत्र तत्राञ्च सायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्तः श्रेयत्न शंसितुर्महसि प्रायेणाल्पायुष सभ्यकलावस्मिन् युगे जना मन्दासु मन्दमतयो मन्दभाग्याह्युपद्नुता भूरिणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागश अतः साधोऽत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि नः श्रद्धदानानं येनात्मसंप्रसीदति सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातु यस्य चिकीर्षया तन्न शुश्रूषमाणानमहस्यङ्गानुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्न संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृणं ततः सद्यो विमुच्येत यद्भीति स्वयं भयं यत्पादसंश्रया सूता मुनय प्रशमायना सद्यः पुनन्त्युस्पृष्टा सुर्वुधान्योऽपि नुसेवया को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽङ्गकर्मण शुद्धिकामो न शृणुयाद्यश कलिमलापहं तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्धधानां लीलया ददत कला अथाख्या हि हरे धीमन्वतारकथा शुभा लीला विददत स्वेरमीश्वरय्यात्ममया यया वयं तु न वित्रप्यामुत्कश्लोकविक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानं स्वादु स्वादु पदे पदे कृतवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशव अतिर्मर्त्यानि भगवान् गूढकपटमानुष कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरे त्वं नः सन्दर्शितो धात्रा दुस्तरं दिस्तितीर्षतां कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवं ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठां धुनोप्येते धर्मकं शरणं गत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नेमिषोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण अथ द्वितीयोऽध्यायः। व्यास उवाच
इति सम्प्रशन्हिष्टो विप्राणां रोमहर्षणि प्रतिपूज्ये वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रम। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमुपेतपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्वदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणायः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपायमि गुरुमुनीनाम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। मुनय साधु पृष्टोऽहं भवद्भिः लोकमङ्गलं यत्कृतकृष्णसम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति। वासुदेवे भगवती भक्तियोगप्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहेतुकं। धर्मस्वनुष्ठिति पुंसां विश्वक्सेन कथासु य नोत्पादयेद्यतिरत्तिं शम एव हि केवलं। धर्मस्य हापवर्गस्य नार्थो नात्यो कल्पते नार्थस्य धर्मकान्तस्य कामो लाभाय स्मृता। कामस्य नेन्द्रियप्रीतिलाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मोति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। तञ्च मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मानि चात्मानं भक्त्या श्रुतग्रहीतया। अतः पुष्पिद्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः स्वनुष्ठितधर्मस्य संसिद्धिहरितोषणं। तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वा तं पति श्रोतव्यकीर्तितव्यश्च ध्येयपूज्यश्च नित्यदा। यदुध्यासानि युक्ता कर्मग्रन्थिनिबन्धनं छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारितं। शुश्रूषोषद्दधानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान्मन्यते सेवया विप्रा पुण्यतीर्थनिषेवणा। शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन इत्यन्तस्तोभिद्राणि विधुनोति सुयस्ततां। नष्टप्रायेश्च भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युमत्र श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत् एतेरेनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगता भगवतत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। भिद्यते हृदयगन्तिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अतो वे कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्या प्रसादनीं। सत्त्वं रजस्तम् इति प्रकृते गुणास्ते युक्तपरपुरुष ईयाय दत्ते। इत्यादये हरिविरिञ्चन्ति हरति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वनोर्णिनां यु। पार्थिवाद्यारुणो धूमस्तामादिगृह्स्थयीमय तमसस्तु रजस्तास्मत्सत्त्वं यद्दर्शनं। भेजिरे मुनयोत्थाग्रे भगवन्तमधोक्षजं सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये नुतानिह। मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपनीतान् नारायणकलाशान्ता भजन्ति हानसूयव। रजस्तं प्रकृतय समशीला भजन्ति वै पितृभूतप्रजेशादीन श्रियेश्वर प्रजेत्सवा। वासुदेव परवेदा वासुदेव परमखा वासुदेव परयोगा वासुदेव परक्रिया वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तप वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। स एवेदं रससर्जाग्रे भगवानत्मयाया सदसद्रूपया चासो गुणमय्या गुणो विभु। तया विलसिते द्वेषु गुणेषु गुणवानिव
अन्तप्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृम्भिता यथा हि वहितो वै दारुष्वेकस्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु तथा पुमान् अस्यो गुणये भूते सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मतेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भाव्यत्से सत्त्वेन लोकान् वेलोकभावना लीलावतारनुरुतो देवर्ति अङ्गरादिषु इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नेमिषोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलमादो लोकशिश्रिक्षया यस्यांभसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वत नाबृहदाम्बुजादासिह्या विश्वसृजां पति यस्या वयसंस्थाने कल्पितो लोकविस्तर तद्वे भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितं पश्यन्त्यदो रूपमदभच्च रुक्षा सहस्रपादोरुभाजानद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिन्नासिकं सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोल्लसत एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययं यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवर्तियङ्ग्यनरादय स एव प्रथमं देवकौमारं सर्गमास्थित चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितं द्वितीयं तु भवायाश्च रसातलगतां महिम् उद्वरिष्येनुपादत्त यज्ञेश शोकरं वपु तृतीयं ऋषिसर्गं च देवार्षित्वमुपेत्य स तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यत तुर्यधर्मकलासर्गे नरनारायणवृषि भूत्वात्मपौरोपोषमेत करोद दुश्चरं तप पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशकालविप्लुतं प्रोवाच सूर्ये साख्यं तत्त्वग्रामविनिर्णयं षष्ठे अन्ये परयत्वं वृत प्राप्नोत यूसूयया आन्वीक्षकीमलकार्यप्रभा बिभ्यौचिवान् ततः सप्तमाकृत्यां रुचिर्यज्ञो भजायत स यामाद्य सुरगुणैरप्यताम्बूतान्तरम् अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रम दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रमनमस्कृतं ऋषिभिर्यार्चितो भेजे नवं पार्थिवं वपु दुग्धे मामोषधीर्विप्रास्तेनायं स उष्यतं रूपं ससज्जिगृहे मात्स्यं चाक्षुषोदशनं पल्लवे नाव्यारोप्य महिमय्या माध्वस्तं मनुं सुरासुराणां मुददिदं मत्ततां मन्दराचलं दग्धे कमठरूपेण पृष्ठे एकादशे विभु धान्वन्तरं द्वादशं त्रयोदशमेव च अपायात् सुरन्या मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया चतुर्दशं नारसिंहं बिभिद्येत मूर्जितं ददारकरजेर्वक्ष्यरेकां कटत्कृद्यता पंचदशं मावनकं कृत्वा गाध्वद्रम्बले पदत्रयं याचमानं प्रत्याशितृविष्टपम् अवतार षोडशमे पश्यन् ब्रह्मदयो नृपान् त्रिसप्तकृत्व कुपितो निक्षत्रात्मकरोन्महीम तत्र सप्तदशे जात सत्त्वसत्यां पराशरात् चक्रे वेदरतो शाखा दृष्टा पुंसोलमेधस नरदेवत्वमापन्न सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहाधीनचक्रे वीर्याणते परम् एकोनविंशतिमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान् हध्वरम् ततः कलो सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नाम्ना जनसुत कीकटेषु भविष्यति अथासो युगसन्ध्याया दस्युप्रायेषु राजसु जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कल्लिजर्गत्प्रति अवतारहं संख्येया हरे सत्त्वनिधिर्जिजा यथा विदासिनी कुल्या सरसयुसहस्रश ऋषियो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजस कलाः सर्वे हरेरेव सप्राजत प्रत्यस्तता एते चांशकलः पुंस कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे जन्मं गुह्यं भगवतो य एत प्रयतो नर
सायं प्रातर्गृणं भक्त्या दुःखग्रामद्विमुच्यते। एतद्ध्रुवं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः मायागुणे विरचितं महदादिभिरात्मनि। यथा नभसि मेघागो रेणुर्वा पार्थिनोऽनले एवं द्रष्टरीदृश्यत्वमारोपितमबुद्धिभिः। अतः परं यद्व्यक्तं न्यूनगुण्यव्यूयितम् अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वा स जीवो यत्पुनर्भव यत्रेमे सदृशरूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्ययात्मानि कृते इति तद्वृद्दर्शनं। यद्यशोपरता देवी मायावेशारदीमती सम्पन्नमेविति विदुर्महिन्म स्वे महीयते। एवं जन्मानि कर्माणि हि कर्तुर्जनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पते। स वा इदं विश्वममोघलीला सृजयत्यवती न सजन्तेऽस्मिन् भूतेषु चान्तहित आत्मतन्त्राषाढवर्गिकं जिघ्रतु षड्गुणेश। न चास्ये कश्चिन्निपुण्येन धातुरवेतु जन्तुको मनीष ऊती। नामानि रूपाणि मनोवचोभिसन्तवतो नटचार्या विमाग्य स वेदधातुपदवीं परिस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणे। यो मायया सततयानुवृत्त्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम् अतेह धन्या भगवन्त इत्थं यद्वासुदेवखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूये परिवर्त्र उग्र। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तम श्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषि निःश्रेयासाय लोकस्य धन्यं स्वत्यजनं मह। तदितं ग्राहयामास सुतमात्वताम्बरं सर्ववेदेतिहासानं सारं सारं समुद्रितं। स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गङ्गायां परितं परमर्षिभिः। कृष्णे स्वधामपोगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलो नष्टदृशामेष पुराणोकोऽधुनोदिति। तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रशे भूरितेजस अहं चाध्यं गमं तत्र निर्विष्टदनुग्रहा। सोऽहं वश्रामिष्यामि यथाधीतं यथामति। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नेमिषोपाख्याने तृतीयोऽध्यायः।